वेलकम टू माय चैनल विराट स्टडी एक्सप्रेस। आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स मई 2024 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हमें करंट अफेयर्स कर लेने चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस तो ज़रूर आते हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, किसी भी लेवल का हो। तो अब बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, recently, which city of UAE has introduced a gaming visa for global industry leadership? Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Kalba. The right answer is Dubai. Dubai has launched the Dubai Gaming Visa under the Dubai Program for Gaming 2033, DPG 2033। ये DPG की फुल फॉर्म जो है वो यहाँ पर दुबई प्रोग्राम फॉर गेमिंग 2033 है, to position itself as a global gaming leader. The DGP 2033 aims to transform Dubai into a gaming hub, creating 30,000 new jobs. ये जो भी प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है दुबई ने, ये 30,000 के आसपास जो हैं न्यू जॉब्स जो है क्रिएट करने वाले हैं और एक गेमिंग हब बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, Rudram second air-to-surface missile recently seen in news is developed by which organization? DRDO, ISRO, JAXA, ESA. The right answer is DRDO. And the Defense Research Development Organization, DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। DRDO की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द रुद्रम सेकेंड एयर टू सरफेस मिसाइल ही, एयर टू एयर नहीं है, एयर टू सरफेस मिसाइल फ्रॉम SU-30 MK फर्स्ट एयरक्राफ्ट ऑफ ओडिशा कोस्ट। The test met all the objectives, validating its controls and guidance system. Defense Minister Rajnath Singh praised the achievement. The Rudram second, a solid propelled missile, enhanced the armed force capabilities to utilize advanced DRDO technologies. Question number 3, BHEL recently signed an agreement with which Research Center for Hydrogen Production using an alkaline electrolyzer system? Option A, Indira Gandhi Center for Atomic Research. B, Council of Industrial and Scientific Research. Option C, Baba Atomic Research Center. And last option, Indian Agricultural Research Institute. The right answer of this question is Baba Atomic Research Center. State Run Bharat हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये जो भेल है BHEL, इसकी फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, हैज़ साइंड ए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट विद द बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अगर बार्क की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है तो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, फॉर ए 50 किलोवाट alkaline electrolyzer system to produce hydrogen. BARC, India's premier nuclear research facility based in Trombay, Mumbai, operate under the Department of Atomic Energy overseen by the Prime Minister. It supports extensive research across nuclear science and engineering crucial for the Nuclear Power Corporation of India. Question number 4. Recently, where was the International Conference on Nuclear Security? Yes, ICONS 2024। आइकॉन्स यानी फुल फॉर्म इसके हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी हेल्ड। ये कहाँ पर हुआ बताइए? इसका राइट आंसर जो है क्या हो सकता है? बीजिंग चाइना में, अस्ताना कजाकिस्तान में, वियना ऑस्ट्रेलिया में, पेरिस फ्रांस में। बताइए कहाँ पर हुआ? ये वियना ऑस्ट्रिया में हुआ। ओके, the IAEA's International Conference on Nuclear Security, ICONS 2024, held in Vienna, highlighted nuclear waste concern. Currently, 145 states reports incident of loss stolen or mishandled nuclear material to the IAEA. Radioactive substances are widely used in medical, educational, and industrial sectors. The main concern is extremists using these material in a dirty bomb
which though less deadly than an atomic bomb could cause mass panic in urban areas. Next question, question number 5th. Recently, how many nations have signed the Zero Debris Charter at the ESA EU Space Council? Option A 11, option B 12, option C 13. Sorry. Last option 40. What is the right answer of the question 5th? Option B is the right answer, 12. Nations have signed the Zero Debris Charter at the ESA EU Space Council. Okay. Next question. Question number 6. Kondinia Wildlife Sanctuary, recently seen in the news, is located in the state. कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताइए किस स्टेट में लोकेट करती हैं? यस, राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश. ओके. Researcher from the Zoological Survey of India and the Andhra Pradesh Biodiversity Board rediscovered the Sri Lankan golden back frog in Kondinya Wildlife Sanctuary, Andhra Pradesh, after 2 centuries. This sanctuary, part of Project Elephant House, Asian elephants, and features diverse flora and fauna. The frog, once considered endemic to Sri Lanka, highlight ancient biogeographical connection dating back 15 million years. Next question, question number 7. Recently, who has become oldest woman to climb Mount Everest? Option A, Kami Rita. Option B, Jyoti Ratre. Option C, Sangeeta Bhel. Or option D, Premlata Gharwal. The right answer is oldest woman. याद रखिएगा, oldest woman to climb Mount Everest वो कौन है? Jyoti Ratre. Right? Jyoti Ratre has become oldest woman to climb Mount Everest. 55-year-old entrepreneur हैं, fitness enthusiast from Madhya Pradesh, become the oldest Indian woman to summit Mount Everest on May 19. Her achievement comes 6 years after Sangeeta Bhail's record. This was Ratre's second attempt after harsh weather halted her 2023 climb. She has already conquered the highest peak on 5 continents and aims to summit Mount Windsor and Denali to complete all the 7. Next question. Question number 8. Bambi Bucket Operation. Bambi Bucket Operation, recently seen in news, is associated with which state? ये जो बाम्बी बकेट ऑपरेशन था जो खबरों में दिखाई दिया, ये किस स्टेट से मतलब एसोसिएट करता है? राइट आंसर इज उत्तराखंड. ओके, ये उत्तराखंड से बिलोंग करता है बाम्बी बकेट. Responding to forest fire in Uttarakhand Pori Garhwal sector, the IAF deployed Mi-17V5 helicopters for Bambi bucket operations. Okay, ये mostly जो है इसलिए यूज़ किया जाता है. This specialized firefighting techniques involving suspending a container beneath a helicopter, filling it from a water source, and then releasing it over the fire zone. Right? Next question, question number 9. Which country recently passed the bill that permit prisoners to join military? Okay, ये कौन सा देश है जिसने हाल में ही एक बिल पास किया है और प्रिजनर्स को मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए अलाउ किया? यूक्रेन, इटली, रशिया, ईरान. कौन सा देश है ऐसा जिसने बिल पास किया है कि प्रिजनर्स भी जो है मिलिट्री ज्वाइन कर सकते हैं, अलाउ कर दिया गया है उनको? राइट आंसर इज यूक्रेन. Ukraine Parliament approved a bill permitting select prisoners to join the military due to a shortage of troops, a shift from past opposition. Next question, question number 10. Which day declared as the World Football Day by the UN recently? Option A 23rd May, option B 24 May, option C 25th May, and option D 26th May. The right answer is 25th May. Okay.
On May 7, 2024, the UN General Assembly, comprising 193 members, passed a resolution to designate May 25th as World Football Day annually. Okay, यानी मई मई की 7 तारीख को यूएन जनरल असेंबली, जिसमें 193 मेंबर्स थे, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया कि जो मई की 25th डेट है वो कंसिडर की जाएगी वर्ल्ड फुटबॉल डे एनुअली. ओके. Which country recently unveiled the world first 6G device? Japan, China, Russia, India. Right answer is Japan. A Japanese consortium unveiled the world's first high-speed 6G prototype graduate, surpassing 5G by 20 times, developed by Docomo, NTT, NEC, and Fujitsu. It can transmit data over 300 feet at 100 Bpps. Tested successfully indoor and outdoor. However, 6G is still in developmental stage and not ready for commercial use. Despite its impressive speed, there are inherent drawbacks in network technology. Next question, question number 12. Recently, which state has decided to implement the central government smart PDSK? Tamil Nadu, Kerala, Maharashtra, Karnataka. Right answer is Kerala. Kerala embraced the smart PDS scheme aimed at modernizing and enhancing efficiency in the public distribution system. Led by the Department of Food and Public Distribution, it aimed to curb food grain leakage and improve distribution chain efficiency. This technological-driven initiative centralized ration card data and enables real-time monitoring from procurement to distribution. Posts are shared between union and state government, with the state covering expenses for key components like training and infrastructure. Smart ration card with beneficiary fingerprints ensure transfer transaction. Question number 13. Recently, who has been appointed as the chairperson of Grappling Committee of India for Jammu and Kashmir region? Sania Kadri, Vinod Sharma, Swati Saxena, Ravi Kant. Yes. जम्मू एंड कश्मीर रीजन के लिए एक ग्रैपलिंग कमेटी है इंडिया, उसके चेयरपर्सन किसको अपॉइंट किया गया? यस, सानिया कादरी. ओके, राइट आंसर. सानिया कादरी अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ द ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया फॉर जम्मू एंड कश्मीर. रिकमेंड किसने किया है? शुभम चौधरी ने. Responsibilities include overseeing grappling sports and operations and providing strategic guidance. Her appointment aims to promote and nurture grappling talent in the region, covering all the area within state for grassroots development. Next question, question number 14. Recently, which organization has been granted Navratan status by the Department of Public Enterprise? BHEL, HL, HMTL, IREDA. Yes, right answer is IREDA. IREDA की फुल फॉर्म जान लीजिए सबसे पहले. इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड. IREDA full form Indian Renewable Energy Development Agency. The Department of Public Enterprise has bestowed Navratan status upon IREDA. Established in 1987 under the Ministry of New and Renewable Energy, IREDA function as a non-banking financial institution. Okay. The Navratan status is awarded based on specific criteria, including consistent high performance, such as achieving excellent or very good rating in MOUs for 3 out of last 5 years and a composite score of 60 or above in selected performance indicator. Next question, question 15. Recently, which city is constructing the world's largest airport, AI Maktoum International Airport? Bombay, Dubai, London, New York. The right answer is दुबई. वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट जिसका नाम है AI मक्तुम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पर कंस्ट्रक्ट हुआ? ये दुबई में कंस्ट्रक्ट. ओके, यस.
किसकी लीडरशिप में हो रहा है ये? शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंगलाई माता Hinglaj Mata Temple, recently seen in news, is located in which country? Nepal, Bangladesh, Myanmar, Pakistan. The right answer is Pakistan. Hinglaj Mata Temple, Pakistan में है. Okay. Hindu devotees gather in Hinglaj, Las Bela district, Pakistan for an annual festival at the ancient cave temple of Hinglaj Mata. The pilgrimage begins with a trek to steep mud volcanoes where pilgrims climb stairs and walk to reach the summit. Tossing coconuts and rose petals into the crater, they seek divine permissions to visit the temple dedicated to goddess Hinglaj. It's one of the oldest temples in the Indian subcontinent, located near the Hingol River. ये किसके नज़दीक है? हिंगोल रिवर के, इन बलोचिस्तान, पाकिस्तान. The temple complex features shrine, caves and sacred natural formations. Next question, question number 17. According to IQAIR, which city has recently been ranked as the most polluted city globally? Kathmandu, New Delhi, Pokhara and Hyderabad. Most polluted city. Yes, Kathmandu. According to IQAir, okay, Kathmandu is the most polluted city in the world as of May 2, 2024. IQAir is a Swiss technology company that monitors the pollution level of 101 cities in real time. The Ministry of Health and Population of Nepal has advised residents to wear masks due to alarming increase in air pollution in the Kathmandu Valley. In 2023, IQAir World Air Quality Report ranked India as the third most polluted country and New Delhi has the most polluted capital city. Question number 18. Pension Department has recently launched an online portal for government retirees. What is the name of the portal? Abhyukt portal, Vridhi portal, Bhavishya portal, Vikas portal. Right answer is Bhavishya portal. Okay. The Pension Department has launched an online portal called Bhavishya for tracking pension payments and sanctions for government retirees. The portal is integrated with the pension processing and payment service of 5 banks, including State Bank of India, Bank of Baroda, PNB and Canara Bank. Question number 19. Bhadra Tiger Reserve, recently seen in news, is located in the state. Right answer is Karnataka. The Bhadra Tiger Reserve, located in Karnataka Western Ghat, has seen a surge in safari visitor. Tourists must tread carefully in this eco-sensitive zone. The reserve, declared Indian 25th Project Tiger Sites in 1998, houses a significant tiger population alongside elephant and diverse fauna. Drained by the Bhadra River, it boasts dry deciduous to semi-evergreen vegetation, including teak and medicinal plants. Other Karnataka tiger reserves, including Bandipur, Nagarhole, Dandeli, Ansi, Bilgiri, Ragana. Next question. Question number 20. World Press Freedom Day is observed on May 1st, May 3rd, May 5th, and May 7th. May 7th is the right answer of this question. Which bank has introduced no Jhanjat life insurance Fatafat? Which bank has introduced no Jhanjat life insurance Fatafat campaign? This revolutionizing insurance purchase experience. किसने इंट्रोड्यूस किया है कैफे? नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट. कितना अच्छा, मतलब एक थीम है. नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट. ये किस बैंक का? HDFC, एक्सिस बैंक, IDFC बैंक एंड इक्विटास बैंक. यस, द राइट आंसर इज HDFC बैंक. बड़ा अच्छा थीम है, मुझे बहुत पसंद आया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. पूर्णिमा देवी Burman got the Green Oscar Whitley Good Award 2024. This belongs to which state? Tamil Nadu, Nagpur, Assam, Haryana.
The right answer is Assam. 23rd question. Who has been appointed as the National Ambassador of UNICEF India? Kareena Kapoor, Alia Bhatt, Deepika Padukone, Nayanthara. The right answer is Kareena Kapoor. Question number 24. Thomas and Oval Cup 2024. China secured both men's and women's crowns. Cup is associated with. The right answer is बैडमिंटन. बैडमिंटन, ठीक है. राइट आंसर क्या है इसका? बैडमिंटन. नेक्स्ट क्वेश्चन 25th. UNESCO Guillermo Cano Prize 2024 awarded to which national park? Ukraine, Palestine, Israel, Russia. The right answer is Palestine. 26th. World Asthma Day 2024 is observed on May 02, May 04, May 07, May 09. What is the theme for this day? Educating individual, B. Global Initiative for Asthma, and Asthma Education. Right answer is both the question. World Asthma Day is observed on May 07, यानी 7 तारीख, मई की 7 तारीख को वर्ल्ड आस्थमा डे ऑब्जर्व किया जाता है. एंड इसका थीम क्या था? आस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स. आस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन 27th क्वेश्चन इज ये साथ के साथ है 26 और 27. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 28. हमारा क्वेश्चन साइंटिस्ट अनवेल्ड वर्ल्ड डीपेस्ट ब्लू होल. इटली, मैक्सिको, पोलैंड, स्वीडन. द राइट आंसर इज मैक्सिको. ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन कीजिए बिना टाइम वेस्ट किए. वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट डे 2024 is observed on. Yes, right answer is 8 May. Next question. National Technological Day 2024 is observed on. Yes, मई 11. अब ये कंफ्यूज मत होइएगा. देखो मई 01 ये 2 बार रिपीट हो चुका है. और मई 11 कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम मई 11 की जगह मई 1 लगा देते हैं. तो ये कन्फ्यूज़ होने के लिए ऑप्शन जब भी आप फिल करें तो बहुत ध्यान से पढ़ें, तभी फिल करें जब आप श्योर हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन 31st. यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्स डैश हैज़ वर्ल्ड फुटबॉल डे. मई 10, मई 16, मई 21 एंड मई 25. बोलिए क्या राइट आंसर इसका? अच्छा आइडिया. राइट आंसर इज मई 25. ओके, हाँ, मई 25 जो है वो हैज़ वर्ल्ड फुटबॉल डे अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस. Which nation won the Madam Sultan Ajlan Shah Hockey Trophy 2024? किसने जीती ये ट्रॉफी? हॉकी. मैडम सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024. जापान, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान. राइट आंसर? यस. What is the right answer? Right answer is Japan. Next question. Salar Tunnel is recognized as India's highest tunnel. Belong to which state? Tripura, Haryana, Himachal Pradesh, Arunachal Pradesh. The right answer is Arunachal Pradesh. Sunil Chhetri announced retirement is associated with. सुनील छेत्री जो हैं प्लेयर हैं, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की है. तो ये किस मतलब खेल से बिलोंग करते हैं, किससे एसोसिएटेड करते हैं? हॉकी से या फुटबॉल से या क्रिकेट से, कबड्डी से? फुटबॉल से. ठीक है, याद रखिएगा सुनील छेत्री जो हैं फुटबॉल से बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 35th. नेशनल एंटी टेररिज्म डे इज ऑब्जर्व मई 16, मई 19, मई 21 एंड मई 23. राइट आंसर इज मई 21. Which nation will be hosting the 2027 वोमेंस वर्ल्ड कप? कौन ऑर्गेनाइज करेगा, होस्ट करेगा वोमेंस वर्ल्ड कप 2027? पोलैंड, पुर्तगाल, ब्राज़ील, नीदरलैंड. ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. द राइट आंसर इज ब्राज़ील. 37th. Who won Emilia Romagna
ग्रैंड प्रिक्स 2024? किसने जीता ये? लैंडो नॉरिस, सिल्वर एरोस, लेविस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपन। राइट आंसर इज मैक्स वर्स्टैपन, जिन्होंने ये एमिलिया रोमांगा ग्रैंड प्रिक्स 2024 वॉन किया। 38 which nations has become the 99th member of the International Solar Alliance? Poland, Sweden, Spain, Holland. Yes, right answer is Spain. 39th question, which organization has honored with the Economic Times HR World Future Ready Organization Award 2024 to 25th session? NHPC, NTPC, NLC, none of this. किस ऑर्गेनाइजेशन को ये सम्मान मिला? तो ये है NHPC इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, विच टीम वॉन IPL 2024? राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर्स। बताइए जल्दी से, ये तो मैच देखने वालों को तो पता ही होगा किसने जीता IPL 2024। राइट आंसर इज कोलकाता नाइट राइडर्स। थैंक यू एवरीवन टू वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ ए हम्बल रिक्वेस्ट, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।